There we go. Okay, so the objectives जो हैं इसके अंदर we will cover compare and contrast various features and requirements for Windows Microsoft operating system. It says Windows Vista, but we will be covering Windows 10. Given a scenario, install Windows PC operating system using appropriate methods. किस चीज़ से क्या यूज़ करके हम Windows को इंस्टॉल कर सकते हैं. Use appropriate Microsoft operating system features and tools. उसके जो tools हैं और basic features हैं we will discuss that. उसकी control panel की utilities हम discuss करेंगे. And install and configure Windows networking on a client desktop. So Windows 10 के कितने editions आए थे? The first one everyone knows about is Windows 10 Home. Windows 10 Home जो है was a standard Windows 10 version which runs all previous version of Windows. So Windows 10 Home जो है it's like a legacy system जिसके ऊपर पुरानी applications भी run होती हैं. Whereas Windows 10 Pro, the Pro version adds data protection via encryption. उसके अंदर encryption आ जाती है, remote desktop की capabilities आ जाती है, meaning कि आप अपने कंप्यूटर को remotely access कर सकते हो if you have Windows 10. If you have Windows Home, आप remotely उसको access नहीं कर सकते हैं. And domain connectivity भी is provided in Windows 10. Windows 10 Pro is a basic version of for businesses. Okay, इसके आगे हम देखेंगे और अलग enterprise version भी आएंगे. Excuse me, but domain connectivity or for company and school networks. फिर Windows 10 in S mode, basically focused on internet-based processing. S mode is similar to Google's Chromebook, and all apps come from the Microsoft Store. So अगर if you guys know कि Chromebook क्या है, Chromebook एक छोटा सा लैपटॉप होता है एंड उसके अंदर आप सिर्फ एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं. विंडोज़ एस मोड इज सिमिलर. विंडोज़ एस मोड के आपको लैपटॉप सस्ते मिल जाते हैं. द रीज़न वाई कि क्योंकि आप उसके अंदर कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास विंडोज़ 10 इन एस मोड का लैपटॉप है तो आप उसके ऊपर गूगल क्रोम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फायरफॉक्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है. अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर गूगल क्रोम अवेलेबल है देन यू कैन इंस्टॉल इट. ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी हो लाइक सॉफ्टवेयर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट, देन उसमें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं. लेकिन आई जस्ट वांट टू पॉइंट इट आउट, विंडोज़ 10 एस मोड जो है एज आई सेड दोज डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स आर चीपर. So if you want to buy those because the specifications उसके features काफ़ी अच्छे होते हैं कभी, but because it's Windows S mode then people are like no I don't want to buy it. Well, you can convert Windows S mode into a regular Windows mode. वो Microsoft store के अंदर जाके you can basically opt out of the S mode and then it will give you the full Windows 10 home version. फिर है Windows 10 Enterprise जो कि Enterprise लेवल के लिए है, E3 and E5 सब्सक्रिप्शंस के लिए. So volume purchases of Windows 10 Pro for large organizations. Windows 10 E3 is the basic Windows while E5 as Windows Defender Advanced Threat Protection ATP. तो जैसे कि ये बोल रहे हैं Windows 10 की जो E3 का जो वर्जन है इट्स अ बेसिक विंडोज़, जबकि E5 जो है उसके अंदर Windows Defender की कैपेबिलिटीज़ है विच इज़ ए बिल्ट इन एंटीवायरस. आपको अलग से एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है. Windows 10 Enterprise 2015 LTSB which is called Long Term Servicing Branch. इसका मतलब ये है कि ये इसका सपोर्ट ज़्यादा अरसे तक चलेगा which is a Long Term Servicing Branch. Is a lightweight version that does not include updates, Microsoft Store, Cortana, Edge or Media Player. बहुत ही लाइट वेट का ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ये नहीं होती है एंड यू कैन यूज़ इट फॉर समथिंग इवन इफ इट्स समथिंग आपका बहुत पुराना हार्डवेयर हो, यू कैन रन दैट ऑन दैट if it's capable, if it's compatible, because it's a very light version. Then we have Windows 10 Education.
एजुकेशन इज़ फॉर स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. इट्स ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज़ ओनली catered towards the schools and colleges and universities, not for home use. फिर है विंडोज 10 मोबाइल एंड मोबाइल एंटरप्राइज. विंडोज 10 फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स. जैसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स होते हैं, विंडोज़ के फ़ोन्स जो आते हैं उसके अंदर ये विंडोज 10 मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए होते हैं. एंड द एंटरप्राइज वर्जन includes extra feature for IT management. अब IT management it's also called MDM, Mobile Device Management. जो बिग कंपनीज होती है, Amazon, Netflix, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ को वो लोग सेल फोन देते हैं यूजुअली. एंड वो जो सेल फोन होते हैं वो रिमोटली मैनेज होते हैं, क्योंकि अगर 1000 एम्प्लॉयज़ को 1000 फ़ोन्स दिए हैं तो 1000 लोग बार बार अपने आईटी के पास फिज़िकली आके वो आईफोन को अपडेट नहीं करवाते हैं, आईफोन के ऊपर एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करवाते हैं. वो सारे अपडेट्स, सारी एप्लीकेशंस रिमोटली पुश होती हैं. दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट. ठीक है. Then they have Windows 10 IoT Core, which is an embedded version for low-cost IoT and similar devices. ये बहुत ही this is also a very tiny Windows, very limited options in that, and it only works on IoT devices such as any type of like camera type system. Microsoft के जो cameras होते हैं, they have some type of IoT Windows 10 installed on that as well. विंडोज़ 10 की जो फिज़िकल मेमोरी लिमिटेशंस हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो. जैसे कि x86 जो आपको शो कर रहा है, x86 इज़ बेसिकली ए 32-bit वर्जन ऑफ विंडोज़ एंड x64 इज़ अ 64-bit वर्जन ऑफ द विंडोज़. अगर आप भले कोई भी लेवल का विंडोज़ ले लें, एंटरप्राइज, एजुकेशन, प्रो, होम, जो भी आप ले लें, 32-bit विल ओनली गो अप टू 4 GB. तो ये याद रहे, जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर नया विंडोज़ इंस्टॉल करें, यू हैव टू मेक श्योर कि इज़ दैट ए 64-bit कंप्यूटर और इज़ इट ए 32-bit कंप्यूटर. मीनिंग जो उसका जो प्रोसेसर है, इज़ दैट अ 32-bit और अ 64-bit. यूजुअली अब मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स आर कमिंग अप एज 64-bit बिकॉज उसके ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है. एज यू कैन सी, इसके अंदर होम हम नीचे से स्टार्ट करेंगे. विंडोज़ 10 होम आप 128 GB की मेमोरी लगा सकते हैं. विंडोज़ 10 प्रो में 2 TB अप टू, ये मैक्सिमम है. ओके. विंडोज़ 10 प्रो फॉर वर्क स्टेशन 6 TB, एजुकेशन के लिए 2 TB एंड एंटरप्राइज 6 TB. बट याद रहे, जस्ट बिकॉज आपने विंडोज़ 10 प्रो अपने डेस्कटॉप पे लगा दिया और आप समझ रहे हैं कि आप 2 TB की मेमोरी लगा सकते हैं, दैट्स नॉट गोना वर्क. बिकॉज besides Windows operating system limitations, there are limitations for the motherboard also. There are limitations for the processor also. तो अगर आपका motherboard is unable to accept 2 TB of memory, you cannot put that. Motherboard sometimes accepts about 8 GB, 16 GB, 32 GB depending on what type of motherboard you have. So you have to consider all of these things before you upgrade or change the memory. मैक्सिमम आप इतनी जा सकते हैं. नाउ यू नीड टू लुक एट द मैक्सिमम ऑन योर मदरबोर्ड. अगर मदरबोर्ड मैक्सिमम इज ओनली 32 GB, then you can only put 32 GB in this for this operating system. Now ReadyBoost, what is that? ReadyBoost, this feature allows you to use free space on a removable drive, usually a USB drive, as virtual memory and speed of a system. ये मैंने Windows 7 के अंदर कवर किया था. बेसिकली आप USB ड्राइव का जो फ्री स्पेस होता है, यू कैन यूज़ दैट. जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप जब बूट करे तो उसका जो फ्री स्पेस है, योर कंप्यूटर मदरबोर्ड कैन यूज़ दिस टू कैश सर्टेन प्रोसेसिंग क्वेरीज. तो इन दैट योर सिस्टम कैन load faster. आगे जाके I will show you what this is again, but the minimum requirement, at least you need 256 MB space on the USB drive to have the ReadyBoost feature configured. The ReadyBoost is configured from the ReadyBoost tab of the properties dialog box for the removable media device. Removable media drive device होती है, उसके अंदर जाके properties में जाके you will see a ReadyBoost option, and hopefully we will be able to take a look at it after this video.
देन विंडोज़ 10 के अंदर कंपैटिबिलिटी मोड भी उन्होंने दिया हुआ है, जो कि विंडोज़ 7 में भी था, विंडोज़ 8 में भी था. Basically what this is that it configures programs to believe that they are running with Windows XP or earlier versions of Windows. How do you do that? You go to Start, Control Panel, Programs, and then click Use an older program with this version of Windows. Basically जो जितने applications होते हैं, you can also click on the application. For example, आपके पास Microsoft Word है, जो Microsoft Word है आपका है वो 2003 का, और आप चाह रहे हैं कि वो मैं विंडोज़ 10 में चलाऊं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो विंडोज़ 10 में नहीं चलेगा. आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी कंपेरेबिलिटी को विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 2003 को डाल देंगे. इफ़ यू गेट दैट, देन वो विंडोज़ 10 के अंदर भी काम करेगा. नाउ विंडोज़ 10 के अंदर अनदर फीचर इन्होंने डेवलप किया विच इज़ कॉल्ड विंडोज़ डिफेंडर. विंडोज़ विस्टा जो है उसके अंदर ये फर्स्ट टाइम आया था, बट विंडोज़ 10 के अंदर दे एडवांस्ड इट मोर विद ATP. इट्स कॉल्ड एडवांस्ड थ्रेट प्रोटेक्शन, विच मीन्स वो कॉन्स्टेंटली आपके इनकमिंग एंड आउटगोइंग फाइल्स को स्कैन करता रहता है. सो इट्स जस्ट लाइक इन एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो नॉट एन एंटीवायरस और एनीथिंग, यू डोंट नीड दैट एनी मोर इफ यू हैव द विंडोज़ डिफेंडर. फिर Windows firewall used to stop incoming and outgoing traffic. Three basic settings a firewall has: on, off and block all incoming connection. ठीक है ना, तीन ऑप्शन है. firewall का पूरा कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है. It's either yes or no. Okay, that's it. Either yes or no. That's the statement. आप on कर सकते हो, off कर सकते हो, or you can just block it. When you off it, technically it's blocked, but you can explicitly block something too, meaning मैं चाहूँ पांच चीज़ें, 5 IP addresses are coming in. Out of the 5 IP address, I only want to block 2 IP addresses, so I can block that. But if I turn it off, sometimes you can turn off all the 5 IP addresses. So that's the difference here. Security Center window provides a single interface for firewall. जो firewall की window है उसके अंदर सारे firewall के rules आ जाते हैं. Let me show you quickly two things. If I type in Windows Firewall, actually let me just type in firewall. देखो Windows Defender Firewall आ गया. तो ये firewall की है. I can go right here, turn on and off whatever I want. Currently the Windows Firewall is on, and this is the Security Center window I was talking about. यहाँ पे they also have another option. Let me see. ये रहा Windows Defender Firewall with Advanced Security. Windows 10 के अंदर उन्होंने काफ़ी थोड़ा एडवांस कर दिया है, but this is the rules. ये सारे rules शो कर रहा है inbound. ये देखें, check mark means it's all allowed. कहाँ से? public से allowed, enable, allow. यहाँ पे you will see deny rules as well. ये रहा, देखें ये deny है, which is a block rule. ठीक है. So inbound rules मतलब जो rules आपके राउटर के अंदर आ रहे हैं. आउटबाउंड रूल्स जो आपके राउटर से बाहर जा रहे हैं, मीनिंग आपके घर से कहीं और जा रहा है, गूगल के ऊपर जा रहा है, तो ये आउटबाउंड रूल हो गया. गूगल से कोई चीज़ आपके घर के अंदर आ रही है तो वो इनबाउंड रूल हो गया. सो दैट्स द डिफरेंस. सो नाउ क्लीन इंस्टॉलेशन. ये हमने विंडोज़ आई बिलीव 7 में कवर किया था जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे. इंस्टॉल के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट, आप डीवीडी जो कि सीडी होती है डीवीडी, उससे बूट कर सकते हैं, या तो यूएसबी से बूट कर सकते हैं. देयर इज़ अ थर्ड ऑप्शन ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड द पिक्सी बूट, PXE, फ्रॉम अ नेटवर्क बूट. ठीक है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू वुड डू इफ़ यू आर डूइंग एन इंस्टॉलेशन. Second, you have to run a setup file to start the installation process. अब ये जो बोल रहा है नंबर 2 पॉइंट, run setup.exe within Windows, मीनिंग आपके पास एक विंडोज़ लगा हुआ है और आपने सीडी डाली
और विंडोज़ तो आपका चल रहा है, आपने विंडोज़ की लेट्स फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़ 7 चल रहा है और आपने विंडोज़ 10 की सीडी डाली एंड यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट विंडोज़ 10 डीवीडी एंड वो वहाँ से ही आपका पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर देगा. द ओनली इशू विद दैट इज़ दैट that is not going to be a clean installation because वो पुरानी files will still save it in there. ये सारी files which is a key boot files I covered in Windows 8.1. Quickly I will go over it. Boot manager, the Windows boot manager, which is a bootstraps the system. In other words, this file starts the loading of an operating system on the computer. इस file से operating system initially start होती है. BCD is called boot configuration data. It holds information about operating system installed on the workstation, such as the location. जो location होती है उसका path ये BCD के अंदर सेव हुआ होता है. winload.exe जो है, this is the program used to boot Windows 7. So it also helps with Windows. Same thing does for Windows 10. It loads the operating system kernel. This right here, ntos kernel.exe, ये winload जो है ये ntos kernel को लोड करता है. फिर उसके बाद next is winresume.exe. winresume is if the system is not starting fresh but resuming a previous session. अगर आपने स्टैंड बाय या स्लीप मोड के अंदर डाल दिया है तो जब आप कंप्यूटर को वापस खोलते हैं तो ये विन रिज्यूम की जो फाइल है वो इनिशिएट हो जाती है and then it pulls its data from boot manager and then it goes to winresume to resume from where you left off before. Then we have other system files वो जो कि आप देख सकते हैं hal.dll, smss.exe, winlogon.exe, lsass.exe. These system files are needed for system to load up. boot का process, initial process क्या होता है? First it does the self check. फिर उसके बाद BIOS जो है वो finds mbr जो partition होते हैं जो boot sector होते हैं उसको find करता है. जो MGR है it finds the volume boot sector. So for example वो सबसे पहले तो ये फाइंड करता है कि USB से बूट करूं कि CD ड्राइव से बूट करूं कि हार्ड ड्राइव से बूट करूं. तो ये MBR जो है वो उसको बेसिकली बताता है because MBR has the information of the hard drive and all the boots. Now boot manager uses winresume.exe if needed. अगर हम स्लीप मोड में से निकाल रहे हैं तो boot manager winresume को ट्रिगर करता है and then winresume वहाँ से ही उसको कंटिन्यू करता है. boot manager processes also BCD जो है वो उसका process is one of the process and the rest of it is part of the boot process. boot manager, winload, after ये हो जाता है kernel जब लोड हो जाता है then it starts loading the drivers जो कि Win32K के ड्राइवर्स हैं. फिर SMSS के ड्राइवर्स are loaded after winload is loaded. जब ये सब हो जाता है फिर winlogon.exe presents the login screen. जो हम login screen आ जाती है फाइनली वो लास्ट स्टेप winlogon के ऊपर जाके वो बैठ जाता है and asks for the password. ठीक है. Now there's a restore point option also in Windows 10. Windows 8 and 7 में I had discussed this. The option to retrieve it is the same way. अगर आप for example control panel में अगर जाएंगे and you look for system, there we go, and I am looking for, hold on, there's other ways to go. No, this is not where I want to go. I want to go right click in here. Okay, it seems like I forgot myself. I will get back to that, but there is a hold on, system properties. No,
ओके, आई विल गेट बैक टू दैट, बट ये सिस्टम रिस्टोर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ. Actually, now I know where it's at. Hold on. Yeah, device manager or system protection. There we go. Sorry, system protection. Right, there we go. So settings, in about page, and then this is the system settings. System restore point, जो कि Windows operating system की drive है, वो it's on D drive and the rest is off. System restore, अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ, it's gonna start looking for the restore points. Show me more restore points. देखें, नवंबर 11 का शो कर रहा है, जबकि उस टाइम के अंदर विंडोज़ का कोई मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ था. मैं चाहता हूँ to roll everything back to that. I can just click on this, next, and वो उस जो नवंबर 11 का जो इमेज इसने सेव किया है उसके ऊपर आ जाएगा. सो जितनी भी चीज़ें मैंने नवंबर 11 के बाद की थी वो सब खत्म हो जाएगी. सो दिस इज़ द सिस्टम रीस्टोर पॉइंट्स. ओके, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए वी कैन असाइन कि भाई कितना परसेंटेज हम सिस्टम रीस्टोर के अंदर रिजर्व रखें हार्ड ड्राइव वाइज. सो लेट्स से इफ आई इंक्रीज इट 69%, सो it's going to occupy 131 GB for सिस्टम रीस्टोर, विच मीन्स ये मुझे 3-4 महीनों का बैकअप ये सिस्टम रीस्टोर में देगा. बट देन यू कैन लूज लॉट ऑफ स्पेस इन योर एक्चुअल सी ड्राइव. ओके, सो दिस इज व्हाट द सिस्टम रीस्टोर लुक्स लाइक. ये फायरवॉल की विंडो आई जस्ट शोड इट टू यू. जो फायरवॉल की विंडोज वी टर्न इट ऑन. This is the same window, and let's move on to the next. Administrative tools. So users and group mmc.exe, ये basically क्या है? Remember, ये जो option है, you might not be getting that properly in Windows 10 Home. As you can see, यहाँ पे वो option नहीं है. देख रहे हैं आप? There is nothing here. Technically, with Windows 10 Pro, it's supposed to give you a drop down here, and it will show you users and groups and things like that. ये मैंने पहले cover किया हुआ है ये, if you guys remember. And this option is not available in Windows Home. This system is running Windows Home. That's the reason why you don't see it. Now, local security policy. You can type this in run, or you can go to control panel, administrative tools, local security policy. So let's try to type this, see if it works. I'm going to type secure secpool.msc. Okay, not working. So let's go to control panel, and we're going to go to administrative tools and local security policy. Okay, administrative tool. And local security policies. Okay, seems like Windows इसमें है ही नहीं. We are going to take a look at the Windows 10 Professional real quick. As I said, like Home has limited options. There's very little things you can do with Home. Okay, so we will go to Windows 10 Home. As you can see, we're going to Windows 10. Let's scale this. I don't know if you guys can see it, so let me just pop it out and then I'll scale it. Okay, so this is Windows 10. Let's go to, too many things open here. Alright, so we will go to control panel. Make it large. Go to administrative tools. And where is local security policy? देखा? So Windows
10 प्रोफेशनल के अंदर दिस इज अवेलेबल, विंडोज 10 होम में इट्स नॉट अवेलेबल. So this is the difference. You see कितनी सारे options है इसके अंदर. So basically what you can do from here, you can set account policies, meaning password policies, enforce password history, maximum password age, कितने दिन के अंदर password आपका expire हो जाए, these type of things you can set in local security policy. Okay, so just to differentiate, it is available in Windows 10 Professional and above, but not in Windows 10 Home. Okay, so back to our case. Component services, MMC, snap in. MMC quickly आप देख लें, it's the same thing. If I type it in here, mmc dot exe, nope, that's not it. So this, if you can go to manage, and you will see that there you go. ये देख रहे हैं आप, local users and user group. ये आपको ये जो section है आपको Windows 10 Home के अंदर नहीं मिलेगा. This is the MMC I was talking about. Okay, चलें, ये हो गया. We'll move on to the next. More things in administrative tools. Data sources allows you to interact with database management system. This is how you can start. Print management allows you to manage multiple printers and print servers from a single interface. Print management, ये मैंने last time आपको बताया था. Let me see वो home के अंदर है कि नहीं. Home में print management भी नहीं है. So let's go to Windows 10 Professional. You'll go to administrative tools, and print management right here. So here आप यहाँ से print management की window से सारे printers जितने भी हैं आपके, you can manage that. There are no printers installed here. Print server के अंदर, you know, whatever printers you have installed, you can manage them here as well. उसके drivers, उसके ports, whatever you want. So everything can be managed directly from here. So Windows 10 Professional has more options than Windows 10 Home. System configuration tool, ये मैंने last time cover किया था. Selective startup, basically in Windows 10 it's used to control the way the system behaves at startup, and it includes a number of tabs and options as shown. क्या लोड करने का, क्या नहीं लोड करने का, you can set it up here. Then there's something called boot options. In system configuration, you can change the settings of कितनी देर तक वो boot होना चाहिए, किस चीज़ को boot करना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे Windows Vista लिखा हुआ है, आपके सिस्टम में लिखा हुआ है Windows 10. अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, Windows 10, Windows 7, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए आएंगे. एंड यू कैन सेट ए सीक्वेंस के विच वन शुड बूट फर्स्ट. फिर कंट्रोल पैनल के अंदर एक दूसरी सेटिंग भी है, विच इज़ टैबलेट एंड पीसी सेटिंग्स. व्हाट दैट डज इज़ दैट tablet, it's used to configure the device on which the operating system is installed to function as a true tablet. So for example, जो laptops काफ़ी आते हैं, they are touch screen laptops. Certain laptops आप उसको as a tablet भी utilize कर सकते हैं. जैसे जो laptop मैं use कर रहा हूँ, I can flip the screen completely back, and I can use this tablet as this laptop as a tablet, and in that I can configure the tablet pens, you know, the touch pen आती है ना, I can configure that. So instead of using a mouse, I can use this, and here are the options for that. You can use right-handed या left-handed. What does that do? कि आप राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, उस हिसाब से वो पेन जैसे आप पकड़ते हैं वो साइडवेज होती है ना. Like this right here, this is the way the pen is. This is a right way holding pen. Left way holding pen would be like this way. So वो जो एंगल चेंज हो जाता है ना, on based on that, it selects its hardness of touch screen.
So these settings you can change based on your left hand or right hand capability. Quickly, how do you get there? I'll show you. You go to, I will show you this in Windows 10 because it seems like Windows Home has very limited options. So we will go to the control panel and आप जाएंगे tablets. Where am I? Not seeing it. Let me see इसके ऊपर है क्या? हाँ ये इसमें है. Okay. So apparently VM में नहीं है because VM has no touch or pen. So there's no option in there. But this is the option right here. Double tap करें, press and hold whatever you have. कितना slow पेन को टच करना चाहिए, कितना तेज आपकी पेन मूव हो. You can change all these settings over here in pen and touch, which in other versions of Windows it was called tablet and PC settings. Sorry, the tablets and PC settings, which is this one right here. It's almost the same thing, but yeah. Devices and printers. ये वो विंडो है जहाँ पे सारे आपके जो printers हैं for that system are shown. So आप control panel में जाएंगे अगर, you will see an icon called devices and printers, and it will show you all your printers, whatever you have. जो भी offline है, like this is offline, this is offline, these are not actual printers anyway. So it shows you all the printers के driver. You can select on that and you can go to print server properties and see, it will show you all the drivers you have installed. Like Rico class driver, I don't need it because I don't have that printer. I can come here and I can remove it. Remove driver and driver package. Okay. Deleting this printer driver package will remove it from the system. Are you sure you want to delete it? Yes. Delete. Boom. It's deleted. Okay. Samsung universal driver. There is no Samsung printer. Okay. Go ahead and remove it. So you can clear a lot of things up. Sometimes what happens के कभी-कभी print job सही नहीं हो रही होती है. So you want to come here and you want to make sure कि आपके पास जितने printers हैं वैसे ही उसके drivers भी installed हुए हुए हैं. ठीक है ना? So you can do that from here. Now, NIC properties. NIC is network interface card, जो हमारा Ethernet card होता है. उसके अंदर हाफ डुप्लेक्स की सेटिंग्स होती है, फुल डुप्लेक्स की होती है, ऑटोमेटिक वेक ऑनलाइन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस. व्हाट इज दिस? रियल क्विक टेक अ लुक. आप यहाँ पे देख लें. नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर्स में अगर आप जाएंगे, यू कैन क्लिक ऑन चेंज अडैप्टर सेटिंग्स, और जो भी आपका नेटवर्क कार्ड है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे and go to properties. You will get this right here. So this is the QoS they're talking about. Quality of service packet scheduler. This component provides network traffic flow, including rate of flow and prioritization services. So QoS packet scheduler, it's necessary to be checked here, otherwise you may have some quality issues. Okay, next they were talking about wake online, half duplex and full duplex. What is that? Let's see. इसकी हमें जाना पड़ेगा. Yes, there we go. Now wake on LAN is right here. ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका wake on LAN. And the other thing I wanted to show you real quick. Have duplex. Okay. Yeah. So this right here is the settings for the Ethernet for आपके जो कंप्यूटर पे जो भी Ethernet install हुआ है. This is the advanced settings for that. Wake on LAN is the feature which allows it to wake on LAN or shut down on LAN. Speed duplex जो है हम इसकी बात कर रहे थे, auto negotiation, or you can put it in half duplex or full duplex. Usually auto negotiation is preferred because
ये डुप्लेक्स का मैं क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ। हाफ डुप्लेक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इट गिव्स यू, लेट्स से इफ यू हैव 1000 MB, it will only use half of that. Full duplex, if you have 1000 MB, you should use both of that, full speed both ways. Okay, incoming and outgoing. So that's the reason why we keep it on auto negotiations, is because the printers and the other devices hote hain, they work on 100 megs. So if you put over here is certain like 1 gig, which is this one right here, the top one, 1 gig is 1000 MB full duplex, meaning जाने वाला ट्रैफिक भी 1000 MB पे जाए और आने वाला भी 1000 पे आए. If you put that, then the printer will probably not going to behave properly, because printer जो है वो 100 max के ऊपर ही काम करता है. Most of the printers, unless you have industrial or like big printers, then they will work on 1 gig. So that is the reason why keeping it on auto negotiation में क्या होता है, वो खुद ही डिसाइड करता है कि सामने वाला जो डिवाइस है वो उसकी स्पीड क्या है, and उस बेस के हिसाब से it slows and increases the speed. User access control is the prompt comes up when you are opening up some software. This is what I was mentioning it earlier. It is not recommended to turn off. It is not recommended to turn off, but it is very annoying because it keeps popping up. Run this program as an administrator for frequently run programs instead. जो भी आपके every time आप सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो it usually asks you to press yes or no. उस दौरान आप that जो prompt आता है ना, that is the user access control prompt. If you hit no, then you cannot access it. If you hit yes, you can. The problem with this is that जब हम कोई चीज़ automated करते हैं ना, that is when this problem comes up. So you have to make sure कि you run that as an administrator. जब हम ऑटोमेशन कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हो जाए सर्टेन टाइम पे. जैसे ही वो टर्न ऑन हो, वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर खुद ब खुद खुल जाए, ठीक है, और उसके ऊपर एक सॉन्ग चलना शुरू हो जाए, जो भी, ठीक है. अब ये मैंने इसको ऑटोमाइज करने के लिए कंप्यूटर तो चले खुल जाएगा, पर वो विंडोज़ की जो मीडिया प्लेयर है अगर उसको खोलूँगा मैं और ये मैसेज आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली यस नहीं दबाएगा. इट डजंट हैव दैट ऑप्शन. सो यू हैव टू टेल दी कंप्यूटर टू रन इट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मोड. एडमिनिस्ट्रेटिव मोड के अंदर रन करेंगे तो फिर ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द ऑटोमेशन हियर. ओके. Indexing. What is indexing? Basically, indexing जो है allows the OS to find files quickly by looking through a database of entries rather than having to start from scratch each time. Indexing options applets is in control panel. They are indexing basically क्या होता है ना कि एक database, छोटा सा database बना लेता है छोटी छोटी entries का. तो for example आपके पास 1000 files हैं, ठीक है, और एक फोल्डर के अंदर 1000 फाइल्स है, दूसरे फोल्डर में 1000 फाइल है, तीसरे फोल्डर में 1000 फाइल्स हैं. ये 3 अलग अलग फोल्डर हैं. अब उस 3 अलग अलग फोल्डर में से आपको एक फ़ाइल ढूंढनी है. तो अगर ये इंडेक्सिंग ना होती तो बेसिकली वो क्या करता, वो मैन्युअली एक एक फाइल को देखता उस फोल्डर में और फिर इट वुड प्रॉबली फाइंड व्हेन इट वुड टेक वेरी लॉन्ग टाइम. व्हाट इंडेक्सिंग डज इज दैट इट कीप्स द इनिशियल एंट्रीज of those files, not the entire data, just initial entries of the file into indexing database. So all it has to do, वो अपने जो index का database है ना उसके अंदर directly वो देखता है and then it can pull the files quickly. This is what the indexing options look like. So यहाँ पे ये जो folders दिख रहे हैं आपको, these are the folders it is indexing, meaning यूजर्स के फोल्डर के अंदर जो भी है वो इंडेक्स के डेटाबेस में डाल रहा है. स्टार्ट मेन्यू में जो भी है वो इंडेक्स में डाल रहा है. यू कैन पुट मोर फोल्डर्स इन हियर इफ यू वांट, बट एज यू कैन सी देयर आर 1601 आइटम्स currently indexed under this. Okay, and this is where our chapter number 17 ends. Which was about
Windows 10 Professional and Windows 10 other editions. Okay, so tab tak ke liye I'm going to end this video. If you guys have any questions, concerns, or any comments, please make sure to drop them in the comments box. Make sure to like and subscribe and hit that bell notification icon. अगर आप चाहते हैं कि if I make some videos so you can learn about something different, such as installing a server or a NAS or anything like that, put that in the comment and I will make sure to submit those videos for your review. Okay.